My life. I'm so sorry, guys. I don't know what happened. Instagram just crashed. I'm so sorry, sir. I don't know what happened. Instagram just crashed. My bad. I feel so shitty about this because I wanted to go back into the Fuck. comments and read everyone's comments I and start can't do replying. anything. It just got crashed. I don't know why and how. इतना अच्छा सेशन चल रहा था यार, मस्त चल रहा था. No idea. And And I don't know. if I'm able to save the previous one. Like क्योंकि वो forget it, yeah, crash हो forget गया it. just. Forget it, no problem. There'll always Fuck. be a next time. Even now, thank you. There are over 200 people even right now who have started. Superb. So Superb. and I think one thing is that we can stretch it a little bit now. अपना 1 घंटे के बीच में कट हो गया है. But what we'll do is I got some ये जो 1 मिनट जो हम लोग का इंस्टाग्राम बंद हो गया, जी. उसमें मेरे को कॉल आया और बोला यार तू बहुत पका रहा है, तू बहुत ज्यादा ही सीरियस हो गया है लाइफ में. It's not acceptable to us. तो I'll keep it short and sweet and funny थोड़ा बहुत. जी जी श्योर. हाँ. So Good. what You else were you were you were you were telling about the IPL stories. IPL show is nothing. So I've been so they are very superstitious. They're very superstitious. And the year that I backed out of playing after the fourth game, I was called back again to play. And जी. by then Mumbai Indians had lost 4 matches. And on the fifth game, when it was the first game that I came back, and they won. हम्म तो उस दिन से मैं परमानेंट हो गया फिर से. पैसा अब विपुल भाई बोल रहे पैसा नहीं दिया भाई इंटरनेट को पैसा दिया इंस्टाग्राम क्रैश हो गया पता नहीं कैसे. विपुल भाई का इंटरनेट का आईडी और पासवर्ड आप ले लो अगले बार से. इनके विपुल भाई के घर में 4 अलग अलग इंटरनेट प्रोवाइडर्स है. वो एक सेकंड भी मतलब ही डजंट लूज नेटवर्क. My एक God, तो आपको my मिल ही God. सकता है. अख्तर इज Yeah. सेइंग प्लीज टेल अस अबाउट क्राइम पेट्रोल. आई लव क्राइम पेट्रोल. टेल अस क्या. आई लव इट. आई डोंट इग्नोर इट. आई डोंट डिनाई इट. मुझे क्राइम पेट्रोल जैसा शो बहुत पसंद है. Fuck IPL story. Without him, they can't win any matches. It seems could have been gone pitch instead of Kohli and played himself. बट कहीं ना कहीं शायद यार उनका सुपरस्टिशियस और उनके जो प्रेयर्स है काम ही आ रहे हैं. क्योंकि आई थिंक राइट नाउ मुंबई इंडियंस इज द मोस्ट अमाउंट ऑफ विनर्स. वी हैव जी गॉट द ट्रॉफी मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम्स. जी जी एंड जी या जी. समटाइम्स आई रियली फील कि यार मैं भी जाके देखो बैट मार ही लूं. Sir, द बेस्ट वाज व्हेन सचिन वाज देयर. यू जी वोंट बिलीव कि यार उसका ऑरा ऐसा है कि यार हम लोग जाके म्यूजिक सेटअप वेटअप करते थे. ही यूज्ड टू बी इन द नेट्स. He used to be in जी the nets practicing, and every जी. time he has hit no, there used to be a certain sound like tak करके bat का एक sound आता था. And we knew that he's come on. We knew that he's come on the nets. Now I'm reading comments only. Tell us Now about. let's just fucking go with the comments. Tell us about your sexual fantasies and why you want guys more in the same room. Oh So my sexual shit. no. Listen. There's a reality to this. There's a reality to this. Fantasy में कुछ भी possible है, right? तो Yeah. मेरे फैंटेसी में आई वांट टू बी फकिंग स्लीपिंग अराउंड विद एटलीस्ट 4 or 5 रियली हॉट गर्ल्स. वो भी कुछ ज्यादा ही हो गया. एक या दो मतलब यार फक मैन आई एम ब्लेस्ड. बट व्हाई डू आई वांट गाइज इन द सेम रूम में उनकी गांड जलाने के लिए. ये सिर्फ मुझे मिल रहा है, आपको नहीं. आप खाली देख सकते हो. So Akhtar, I hope you got your answer. I put you in the smallest window. Oh my, gay, That is my favorite song. Gay for gay people. My God. Okay. So you have played. You want me to ask questions or leave it here? No. Just Of course, read the ask questions. comment. Ask questions. It's when I'm serious only these guys will attack me. When I'm answering their questions, they will never attack me. So let's talk about international gigs. You have played more than 15 countries, I guess. Which one was the favorite one? And still favorite one?
other than India, of course. I don't remember the exact number of countries. Maybe the mentions I've given you, possibly you have done that investment for me to count the countries. but almost every country में एक अलग ही मजा है. जी. And it also depends कि I have traveled to most of these countries to do private events. जी. I have not played for the people over there. There are only few places that I have gone to play for the local people. I played in London. I played in Ibiza. I've done some events in Spain. Yeah. And when I have gone to play for a private party for some client, I have networked with some of the DJs and artists over there. And in return, I have tried to get a gig, you know, an extra day. कहीं कोई क्लब में आके बजा लूंगा ये वो सब. तो हर कंट्री में कुछ ना कुछ है. It's not like there is any fuck all country or anything like that. It's just that we look up to the entire UK party circuit very hard. American, like Miami and stuff like that. In Spain, it's Ibiza and stuff like that. But every place, in fact, the smaller the city, more the fun. जी. You know what I mean? Read about Vipul Bhai's comment. Vipul Bhai is saying, Clement, I heard you take shower with Nirma powder. It is when the serious question comes, here a comment also comes. ये जो निर्मा का टॉपिक है, ये आज से शायद 10-15 साल पहले अख्तर से शुरू हुआ था और अख्तर पे ही खत्म होगा. Akhtar was the only fucking guy who used to do something a little extraordinary. मतलब एक नाइट क्लब में जरा about 600-700 लोग नाच रहे हैं, बॉलीवुड पे नाच रहे हैं और सडनली एक गाना मिक्स हुआ है जिसमें फुल ऑन washing powder Nirma, दूध की सफेदी, you know, like, and everyone was like, what the fuck just happened? You know, yeah. And looking at him, everyone started enjoying because Akhtar, if you look at him, he's a I think 24 hours he should be a DJ क्योंकि वो जैसे ही DJ console से उतरते हैं ना एकदम ऐसा अटक जाते हैं. You know, एकदम अटक जाते हैं, उसका बॉडी मतलब फ्रीज मोड पे हो जाता है. he is not active. और DJ console में जितना एनर्जी है ना उसके पास, वो it's hats off to him. He's only dancing, jumping. तो वो निर्मा गाने पे जो हिसाब से वो नाच रहा था, उसको देख के लोगों को लगा कि यार फक, ये क्या यार नया कुछ, मतलब दाल में बहुत ज्यादा तड़का हो गया. तो he was dancing and everyone was dancing and it reached a next level. In fact, he today also has the tagline of Nirma on him. I think every year you should make a remix of it. Now Akhtar Bhai is saying, I love you, Clemmy. Vipul Bhai is saying, what DJ should do after getting retire? सबसे पहले तो अपना स्पेलिंग चेक करो. डीजे रिटायर होने के पहले कम से कम ये जो बेसिक लाइफ के स्पेलिंग है रिटायर, और ये विपुल का सवाल का जवाब में देने उसने लिखा है राइट टायर. Right tire, yeah. But if he's trying to say what DJs should do after getting retired, Vipul's retirement plan has already done. He has got a company called Wooful's Kitchen, जो किचन सिस्टम्स में डील करते हैं और उनकी कंपनी निकल पड़ी है. You know, उनको डीजेइंग करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही एक क्लब खोल के बैठ के और डिसाइड कर सकते हैं, चल तू मेरे क्लब में आ, तू मत आ. He can actually hire DJs. He doesn't need to DJ anymore. Jasmeet Bhai asked a question, any suggestions to survive a long career like yours? What the fuck is this career like mine? मतलब मैं तो वही प्रोफेशन में जो वो है. But to survive a long career like yours, I'm little confused with this question. Or he means to say how to survive for long in this career. अरे spell mistake. अच्छा ठीक है. Man, Jasmeet also is one of the guys that you won't believe. When I came to Bangalore to DJ, Jasmeet used to be in the console with us handling lights. एक छोटा सा मिक्सर हुआ करता था, जसमीत लाइट्स हैंडल करता था, और वो भी जब वो कभी कभी मतलब ब्रेकडाउन पे फुल फ्लैश लाइट डालता था तो उसको हमारे से 2 बात सुनने मिलती थी. He moved on to becoming a DJ and that boy has done so well for him कि टुडे मैं उसको फोन करके बोलता हूँ कि यार आपकी क्वार्टर एनर्जी जो कंसोल में है अगर मुझ में आ जाए ना तो आई विल टेक माय करियर टू अनदर लेवल. क्योंकि आई एम बिकम वेरी शाई. व्हेन आई एम इन द कंसोल एंड आई हैव अ माइक इन माय हैंड, मेरी गांड फटती है यार, मैं बात ही नहीं कर पाता हूँ.
you know. जी And जी then I look, and then I had an issue at one time कि जहाँ मैं सोचता था यार ये माइकिंग बहुत चूतिया stuff है. It is real DJing, मतलब music should do the talking, ये वो सब. But you know, the entire commercial scene in music has changed yeah after the whole eruption of music festivals, where the DJs are constantly talking, put your hands up, down, here PT class, practically a PT class is on, you know. But it has become the most engaging situation as to in a party where the DJ is talking and engaging them, especially in private parties. सच्ची yeah मैं बात बोलता हूँ कि your talent could be 50% and your miking skill should be another 50%. जी That is जी going to true get you another gig. And people like Jasmeet, Akhtar, Kilogram, Girish, yes you very know, true even Harsh, a lot of these DJs, I could go on mentioning names. They have so much of energy in them. They cultivate and they put it at use on at the time they're performing. That it is one thing definitely you should have. डेफिनेटली मतलब yeah आप जो भी जॉनर बजा रहे हो, आपके जॉनर में वो चाहिए या नहीं वो अलग बात है, बट वो होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस दिन चाहिए ना वो काम आती है. जी very true that is very necessary. Even Vipul bhai also, he does amazing job when he comes to playing and miking as well. See, अभी Jasmeet is यहाँ saying पे तो you're too मजे kind. बहुत ले रहे हैं. हाँ नहीं, Jasmeet is saying you're too kind. Thank you. Learned from a lot from you. I believe that he must have learned from me, but I have myself forgotten what I'm good at. You know, so I need to bounce back also. And I'm happy that I can see my friends around me doing these things, and I can grab a lesson or two from them. जी Hey, one minute. There's a question. Why do you go for a show in any country and then stay back at random strangers' houses who are just your FB friends for minimum 2 weeks? ये अख्तर पूछ रहा है क्या? Yes. ओके. तो इसके पीछे भी एक फंडा है. मैं एक बात बोलता हूँ. सबसे पहली बात तो whenever you're getting jobs like DJing, modeling, acting that takes you to places, and boss, Yeah. we are coming from India. For us, तो मतलब even Sri Lanka is better. And Sri Lanka is one of the most beautiful countries on Yeah. this planet. Yeah. So I जी feel that whenever I have got this opportunity to travel somewhere, I जी make and I've been a very social person. I've created friends in the industry. Whether or not I stay back longer over there to enjoy everything about that country, their food, their music, their nightlife, and also the sightseeing part of it. Who the fuck wants to go to fucking Miami, play one show, and come back the next day, yaar? You know, unless I would even cancel a show if I had in back home away. I would even Yeah, cancel it. true. I would rather stay there for the week and I would enjoy it. इतना पैसे के पीछे भागो, और आज क्या है, मतलब थोड़ा बैंक में पैसा है तो खाली खाना ही मंगा सकते हो आप, और उससे कुछ नहीं कर सकते जी हो ज्यादा. जी All very that true. money put together today, आज fuck it, nothing. You can only order food. That's about it. There's nothing besides your basic essentials you can get. So, जी you know, it's not that this situation is going to repeat in again, and I hope it does not. But I think enjoy every bit of your life. I have enjoyed every bit of my life. I still do, and I still will. जी one more question. Why do you keep asking me to bring underwear, toothpaste, alcohol every time I go abroad? Akhtar bhai again. My God, I thought I have 4-5 pages of questions written today, and I'll be asking all of them. But the comments are enough. There are certain things I like. There are certain things I like of a certain brand and stuff like that, yeah. So जब भी Akhtar travels fucking 10 times more than me, और underwear, toothpaste, ये सब चीज आप lifetime तो नहीं चला सकते ना एक ही. कहीं ना कहीं जाके वो अंडरवेयर फट भी जाती है यार. इट्स नॉट लाइक कि एड हार्डी का है तो वो मतलब लाइफ टाइम एक ही अंडरवेयर पहनने वाले हो. यू नो, टूथपेस्ट भी खत्म हो जाते हैं. टूथब्रश आई लाइक ऑफ अ सर्टेन टाइप व्हिच इज ओनली अवेलेबल इन दुबई, तो माय फ्रेंड्स ब्रिंग इट फॉर मी. नाउ द फक अप इज बड़ी, आई एम ऑफरिंग द मनी कि यार कितना हो गया बोल, लेकिन सामने वाले का क्या है ना कि बिलिंग इज ओनली 500 or 1000 bucks, तो बोले नहीं छोड़ दे यार, अगले बार देखा जाएगा. मेरी गलती नहीं है, मैं मांगता हूं, मुझे चाहिए, मैं मांग लेता हूं, तुम लेके भी आते हो, पैसा ले लो यार. भैंचो द मूल पहनो बड़े आराम से. No. But you know what? I'll tell you one thing. When we start earning that money, we all start liking everything that is international. You know, from our clothing Yeah. brand to our eating, everything. I know. I have called for even sausages and stuff like that, like from abroad.
But trust me, today there is everything produced in India. बहुत अच्छा है, quality का शायद 19-20 हो सकता है, but there is everything that is made over here. And I think I don't mean to be a lecturer, but I think we should all start supporting our own produce, you know. जी. Then whether it is clothes or drugs. So one second, let me read one more comment. Somebody is saying Clement is the most humble guy, man. Finally, I have comment where there is no more question. One second, Clinton Lobo. अरे ये यार मेरा बचपन का दोस्त है, स्कूल गया हो मेरे साथ, ये कमी, ये ऐसा है ना कि इसके सामने कुछ भी गलत हो जाए ना, ये फिर भी वो खुद हम्बल है, वो बहुत अच्छा छोकरा है. He's very humble. So him being humble, he sees my humble side. I am humble, but I'm a kamina also. जी. Sir, you have to tell us. ये भाई साहब जिस दिन मेरे को साइन अप करेगा ना, the day he will start managing me ना, that is the day I will retire. मतलब मुझे कुछ लाइफ में मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. लेकिन प्रॉब्लम है कि आयुष्मान सिन्हा is also साला मेरे को साइन अप भी नहीं करता है. Of course, Ayushman is here, yeah. One of the youngest, possibly, talent management guys, and he's done so well, and he's done exceptionally good for instance and taken them on an international platform. You know, Jeffrey, how did you manage to do long hip hop R&B sets and about downloading music back in the day? Oh God, this is a very interesting question. But you know what? And these topics get a little boring. But if it's okay with you guys, I will still talk about it. Back in the day, back in the day, internet when it started was again a fantasy. It was like you thinking that you could date Paris Hilton. Not possible. You know what I mean? गरीब fuckers like me didn't have money for internet, man. Wi-Fi वगैरह तो हमारे पास था ही नहीं. We had people in the nightlife who were our friends who could afford internet and they had Wi-Fi, internet at home. Wi-Fi भी नहीं था तभी, वो केबल वाला जो डेस्कटॉप पे हुआ करता था. We had to make friends with these people so that we could use them. Rajat, stop looking at the comments. You're going to lose the plot. I'm not looking at the comments. There is one very funny comment from Akhtar bhai. It was stuck on my screen. What is it? What is the brand of condoms you use or you don't use? If Akhtar puts his finger in the bum, he'll find 5 over there that have been left by me. Vipul bhai's question is which was the favorite club in Bangalore? Club X, Spin, Taika, Hint or Beach? This fucker has given all the favorite club names. इनमें से choose करना difficult है because they have been super good clubs. But my favorite was the UFO, the club that I came to play at. The experience at that club was something else. The sound system and stuff like that, something else. But okay, let's get back to the whole internet scene. Internet over there, at that time was very selective. Very few people had it, or the ones that had it never wanted to share it because it was so expensive. It was so expensive. I paid a bill of 36,000 rupees one time myself, and it was so expensive. So it was very difficult. So we used to, there had to be a natural knack of how you should become friends with the one who has it all. Then we used to beg and plead them. एक बार दोस्ती बन गया कि can I copy your CDs? Can I borrow music from you? हाँ, मैंने सबसे मांगा है. मैं आज भी मांगता हूँ. मेरे को अगर कुछ लगे किसी के पास ऐसा कुछ है जो मेरे पास नहीं है, मैं उसको पूछता हूँ. I am बेशरम that way, and it has only come to my use, and I will give credit to that person also. And I don't think you should hesitate. Yeah, true. I don't think you should hesitate. The ones who think too much, they're thinking too much about themselves. Basically, they become so closed, then it is all about you. And today's world has taught you only about how to mingle, how to collaborate, that is the only way forward. As a solo person, you have a shelf life. That's it. Yeah. But when you mingle, when you coordinate, when you collaborate and stuff like that, I feel that there is no end to it. You can go on and you love everybody and everybody loves you. Why do you always threaten waiters in restaurant that you will give them bad ratings in Zomato because they put less chicken in your soup? I think we are totally taking this show to another level. You should stop paying attention to these fucking comments. Akhtar is going to go on and on. This is basically like we are come here live to look into the sections.
comment section. I think let's stick to the topic a little bit. So you The know, reason going back. I think in last, this is today's 29th session of ours doing Base Culture Live every day. So my neither Instagram crashed, कभी आज तक क्रैश ही नहीं होना Instagram crash, ना मेरा वाईफाई इतना बुरा है. आज मेरा वाईफाई भी और Instagram दोनों क्रैश होके दिखा है because of these comments only. वो उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये सही अकाउंट में चल रहा है कि किसी गलत अकाउंट में चल रहा है. इतना सारा आ गया एक साथ. नहीं सही है यार, जो भी है. विपुल पूछ रहे हैं व्हाट यू कैन डू टू प्लीज टू टेक म्यूजिक. ये मुझे लगता है विपुल की दोस्ती हर्ष के साथ कुछ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इवन विपुल इंग्लिश इज मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसका क्वेश्चन. व्हाट यू कैन डू टू टेक म्यूजिक. टेक म्यूजिक, या मतलब ही इज आस्किंग मी व्हाट कैन यू डू टू प्लीज टू टेक म्यूजिक. One second. Somebody said Pratibha Tiwari. Have you witnessed a Pratibha crime Tiwari. and walked away? Have you witnessed a crime and walked away? Of course. I witnessed a crime and walked away. Now, what kind of crimes? Don't ask. अच्छा, विपुल अभी ब्लेम अपना बेटे को कर रहा है. बोल रहा है मेरे को टाइप करने नहीं दे रहा है. ठीक है. This is the worst reason you could use कि my son is not letting me type. but you know, I'll tell you one thing. Today there is no nothing is less for Indian DJs. I think we have the best Wi-Fi internet plans. yes, Access to music is unlimited. जी. Unlimited. And DJs who produce and put it out over there free for everyone. It's a blessing for many of us who don't produce, and we have all their music and we use that music to play, and we make the bucks. जी. You know what I mean? So I Yeah, think we are really blessed in that way. And like I said, sharing is very important. एक जमाना हुआ करता था जब आप उसमें इतना बड़ा वॉइस टैग डालते थे, you know, produced by exclusive DJ, exclusive. मतलब वो गाने का मास्टरिंग लेवल कम और आपका जो टैग है उसका लेवल कुछ अलग ही हुआ करता. बहुत ज्यादा था. या Have you ever called the wrong name? Oh, भगवान. Have you ever been called the wrong name during sex? नहीं यार, ऐसा मैं उतना भी अनलकी नहीं हूँ. You know, सबसे पहली बात तो ये लड़कियां चिल्लाती ही कम है. Yeah, and I think it's the guys who actually call the wrong name. You know, the girls only say oh yes. वो लड़का काम खत्म करके चले गए, अपना हाथ धो रहे, वो उधर oh yes कर. She's going. So that's when you know. Oh, super. Police. I was witness to that also. No, He has Akhtar been is saying called. that the girls have yelled police when I was sleeping with them. So the last one is there that you have shared stage with almost every big celebrity possible, like on Nadia Ali, David Guetta. So share any experience which was your favorite one. आपने इतने सारे लोग साथ प्ले किया. I think one of each, कोई भी एक ऐसा रहेगा जो आपका फेवरेट होगा, or you would have loved to play with him before him. Well, honestly, genre of music right now doesn't matter. There are certain genres I like, certain I don't like. But मैंने जब मैं सनबर्न के साथ काम किया करता था as a festival में, I also participated. I was the only DJ that was not only the artist but also given the opportunity of doing stage management. Yeah, okay. Stage management. So I have personally come across to many DJs, international जो DJs हुआ करते हैं, जो आए हैं. और हमेशा वो कहावत है ना यार, घर की मुर्गी दाल बराबर है. तो वो उसी हिसाब से इंडियन आर्टिस्ट और इंडियन डीजेस को उतना मतलब अटेंशन और भाव नहीं मिलता था जितना कि एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हुआ करता था. सो फ्रॉम एक्सवेल टू whoever it is to up to Paul Van Dyke and stuff like that, मैं उनसे पर्सनली एक मिला हूँ, दोस्ती बढ़ाया है. And a lot of these DJs, इनके साथ मैं टच में रहा हूँ. And the best part is that I have never utilized or anything to do with कुछ मतलबी situation कि ये मेरा ट्रैक चेक कर लो,
ये देख लो, मैं आपके रिकॉर्ड लेवल पे मेरे को साइन कर लो, या आप मैं एकदम सिंपल यार, जब मैं ट्रैवल करता हूँ और वो बजा रहे हैं, मैं उनके गेस्ट लिस्ट पे रहता हूँ, यू नो व्हाट आई मीन। Yeah. सो आई हैव एंटर्ड सम ऑफ द बेस्ट क्लब्स बिकॉज ऑफ ऑल दीज गाइज। तो मेरा मेरा क्या बोलेगा ना कि ये यार एकदम खतरनाक वाला ऐसा कुछ है नहीं, हमेशा आई हैव हैड गुड मोमेंट्स, आई हैव शेयर्ड गुड वाइब्स एंड दे हैव शेयर्ड गुड वाइब्स विद मी, तो आई ऑलवेज हैव फन, लाइक आई लाइक एवरी मोमेंट दैट आई एंजॉय। Yeah, superb. So Carl Cox was one of them. Carl Cox was one of them. Yeah, Carl like Cox was one of them, and Ultra Music, when I'd gone in 2013, I had managed to get a VVIP access, and that is the first time I had gone to an international festival, first time ever. And I was, I didn't know what the value of this fucking VVIP was, and we were allowed to be on every main stage, on the stage, not in the main area where the DJ is playing, but at the sides. And it was just amazing. And Carl Cox के लिए main stage के ऊपर एक stage बनाया गया था where he was standing, so we were allowed very close to him, you know. So the whole vibe and experience of being there was very different. And after that, I didn't want to be in between the people. Trust me, कि एक बार आपको जो लिबर्टी मिल जाती है ना कि आप स्टेज पे हो और स्टेज से आप मजे कर सकते हो, आपको उन 20-30,000 पीपल के बीच में गच्चड़ में I don't like anymore. True. Justin bhai asked, any San Francisco and Mexico wedding gig story? हाँ, ये अख्तर और मैं गए थे सैन फ्रांसिस्को और मेक्सिको शादी के लिए in November. I had accompanied Akhtar, and it doesn't matter San Francisco or Mexico, हम लोग मलाड भी जाएंगे तो स्टोरीज है, you know? अगर हम अंधेरी से अगर ओशिवारा में गए ना तो there will be a story, you know. The two of us, when we are together, we are like a very strong team, and we don't do anything to do with, there's nothing to do with the DJ. We are just everything chutiya. Like we enjoy, we have so much of fun between the two of us that we pass time, whether it's 1 hour or 10 hours, and there's always some story behind it. कुछ नहीं तो कुछ होता ही है यार. He is messy type, not classy types. Okay. Now I will start calling him Clement sir. Oh नहीं भाई, मैं छोटा हूँ बहुत इसलिए बोल रहा हूँ. रजत, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, ये आप इसी में प्रद्युमन, ये आप कमेंट्स छोड़ दो. मैं मतलब शेव वेव करके आया हूँ यार, ये देखो फुल शेव करके क्लीन बन के आया हूँ. आई यूजुअली डोंट लाइक टू शेव एंड आई हैव नथिंग टू डू. और मैं सोचा कि मैं रजत के शो पे जाके आज थोड़ा सीरियस कुछ लाइफ टाइम डीजेइंग के बारे में बात करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कन्वर्ट हो गया और आप मेरे में कन्वर्ट हो गए. लाइक यू वांट टू डू विद एवरीथिंग दैट इज नॉन सीरियस. मुझे आज I wanted to talk about one thing which was the music school Bangalore. Yes, इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में सोचेंगे क्या बात करनी क्या नहीं करनी. But this is something which I want to talk about. Like tell us why and how did you start that school in Bangalore? Basically when ये मेरा second phase है Bangalore में. मेरा first phase was at the beginning of my career 98 से लेके 2006 मैं बैंगलोर में हुआ करता था. और उस वक्त 2003 में या 2002 में मैंने एक भाड़े पे घर लिया हुआ था एंड आई हैड टू रूममेट्स. शॉन था और जिमी था. तो शॉन एंड मी, मतलब हम लोग ने बेडरूम क्लासेस चालू किए थे घर पे डीजेइंग स्कूल के, क्योंकि इट वाजंट लाइक यू नो हम लोग कमाते कम थे और खर्चा ज्यादा करते थे. एंड वी हैड in 2006 in 2006 you mentioned 2002. No, 2002 or 3. कमाते कम थे और खर्चा ज्यादा था. उस वक्त सब कुछ होता था, मतलब ज्यादा. No, I'm not coronavirus patient. मुझे acid reflux. तो we used to party a lot. तो हमारे दारू के, ड्रग्स के, सबके ज्यादा बिल होते थे, you know. जी. तो कमाना पड़ता था यार, बहुत स्ट्रांगली कमाना पड़ता था. तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चे के लिए हम लोग ने बेडरूम स्टूडियो चालू किया था. एंड उधर भी हमको हमारा एक दोस्त ईवी नाम का एक ब्रांड था, ही यूज्ड टू डील विद इट एंड ही हैड सपोर्टेड अस दैट टाइम. आफ्टर दैट आई वेंट टू बॉम्बे एंड नाउ वेरी रिसेंटली अबाउट 5 years बैक Sean and me came back together and we started the music school, and we moved to a second location, which is my current location. And right now I am the sole owner. Sean has moved on to doing everything, but the music school was especially because today it has become a profession. Yeah,
Yeah. इट्स अ जॉब, इट्स कंसिडर्ड। जब भी कोई डीजे बोलता है कि क्या यार इतना डीजे पैदा हो रहा है, आप भी पैदा कर रहे हो, मुझे तो मतलब सबसे पहले तो उसको एक चमाट मारने का मन करता है, यू नो व्हाट आई मीन। क्योंकि जी आप बहुत छोटी सोच रहे हो, बहुत छोटे सोच रहे हो। दैट इज दोज आर द काइंड ऑफ पीपल हु आर वेरी इनसिक्योर। सी जी। द मोर द मेरियर जो बोलते हैं ना, वो हिसाब से। हम्म। एंड व्हाट हैज हैपेंड इज टुडे डीजेइंग इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, द होल म्यूजिक इंडस्ट्री इज अ प्रोफेशन बाय इटसेल्फ, एंड इट इज अ जी। बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, नॉट इवन मिलियन। इट्स गॉन इनटू हम्म। बिलियन डॉलर्स। मतलब आपने कभी सोचा था कि क्या कोई डीजे को 5 करोड़ रुपया या 6 करोड़ रुपया 2 घंटे का मिल सकता है? ट्रू, वेरी ट्रू। आपने कभी ये सोचा बात, था? नो नो नो, सीरियसली नो। लाइक लाइक नहीं व्हेन, अभी भी जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तभी भी पेरेंट्स, आई डोंट थिंक सो दे वर एग्री। नो मैं दे मेरे डोंट। मेरे माँ जब बाप ने तो जब तीन मैंने तीन चार चार साल तक हाई नहीं बोली। जब मैंने चालू किया था, मेरे एरिया में लड़कों को और लड़कियों को बोला गया था कि इनसे दूर रहना, दूर ये रहना। दूर रहना, इनसे दूर रहना बोला था। आज के जी। तारीख में आई एम श्योर मम्मी लड़की को बोलती रहेगी तू इसके पीछे ही जा, इससे शादी कर, ये साला हफ्ते का 5 लाख कमाता है, यू नो, ये 5 लाख हाँ कमाता जी। है, ये तेरे को सब देगा, यू नो। एंड दोज आर जी जी आर्टिस्ट, जी दोज आर जी डीजेस, दोज आर परफॉर्मर्स। इन हम जी। सबको एक नीचा दिखाया गया था, आज हम सब उठ के ऊपर आ गए हैं। वी आर ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, एंड आई फील कि एंटरटेनमेंट जो कर सकता है, किसी को हंसा सकता है या किसी को एंगेज कर सकता है, दे आर गॉड सेंट, दे आर जी गॉड सेंट। बिकॉज आदमी इतना इतना पैसा कमाता है, इतना पैसा कमाता है अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। By the जी। end of the day, he or she wants to spend it in their entertainment. You understand? They want या to go या travel, they want to go party. So I feel कि DJing जो है वो एक अलग लेवल गया है। हम लोग जब एक जमाने में पार्टी करते थे तो हम लोग को गालियां मिलती थी एरिया में, हम लोग को इतना कोसते थे यार कि इनसे बात मत करो। एंड यू वोंट बिलीव, मेरे एरिया में जब मैं एक साइड रास्ते से चल के जाता था तो वो जो पब्लिक मुझे पहचानती वो क्रॉस करके दूसरे साइड पे चले जाते थे। या we विपुल, had like we had really bad. No, you fuck everyone, fucking pay नो, me. विपुल भाई रोट अ वेरी करेक्ट लाइन, इससे दूर रहना ये बाजा बजाता है। दैट वाज द वेरी हाँ वेरी ट्रू लाइन फ्रॉम आई एम फ्रॉम पंजाबी फैमिली, सो आई अंडरस्टैंड। ये लाइन तो बहुत बार सुनने को मिली है, बहुत बार, 110% ये लाइन तो थी। हाँ हाँ हाँ, नहीं 100% वो मतलब वो जो तरीका है डिस्क्राइब करने का, बाजा या बैंड या जो भी है, वो अलग अलग जोन्स में अलग अलग है। बट यू आर नॉट कंसिडर्ड टू बी डूइंग एनीथिंग गुड। एंड आई एम नॉट ओनली जी। टॉकिंग अबाउट डीजेइंग, पीपल हु यूज्ड टू सिंग, हाँ जी। people who were singers, people who were dancers, people who they were considered कि मतलब ये क्या चूतियागिरी कर रहा है यार, गाना गाती है ये, you know, ये भी कोई जॉब है। बट टुडे you are the highest paid if you're good at it. Today या a stand-up comedian is also known to be one of the richest, you know what I mean? लेटेस्ट, या One of the richest, ट्रू। मतलब इसमें बहुत पैसा है डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड सर, मैं जैसे कि आपको बोला कि इतना सब कमाने के बाद आदमी अगर उदास है तो क्या फायदा ना। जी। आज भी हम इतना कमाते हैं। रजत, आई थिंक विल एंड द सेशंस, क्योंकि मेरे को आपका कंसंट्रेशन सिर्फ कमेंट्स में नहीं जा नहीं रहा है। नहीं नहीं, मेरा कंसंट्रेशन है ही नहीं कमेंट पे। आई एम थिंकिंग व्हाट नेक्स्ट टू आस्क। तो द म्यूजिक स्कूल का आंसर अभी तक नहीं आया। यू हैव आंसर्ड मी 2002 2003 story, No, but I told you the music school for me over here is to train DJs, and it's not only to show them how to mix two tracks. yeah, I have been through a certain experience in my life, and today also I am learning so much from everyone. Now, whether they are newcomers or whether they are my friends, I जी still learn. Even today, I learn from Jasmeet, Harsh, or whoever it is, Akhtar, everybody, no matter how close we are as friends, Vipul, whoever, how close or how not, there is something even today you learn. Your eye for learning has to always be there, and how you utilize it. See, it's very easy to pay an X amount and go and learn, learn. educational wise. But to be successful and put it out there and to be accepted is a different ball game, boss. Yeah, yeah. And if you are not someone who's socially accepted, who's socially not friendly, you are the last in the race. True. You are the Very last true. in the race. So I think relationships are very important. जितना आज डीजेइंग में your skill matters, talent matters, then that too relationship also matters. 110%. So I do classes by myself for every batch, and in that Okay. class I only teach them
I only teach them the ways about to go, you know, like how to go about with things. How Okay. to go. I Okay. don't teach them anything skillful. क्योंकि स्किल Okay. आपके अंदर से आएगी. जी. मेरे जो फैकल्टी है वो आपको ऑलरेडी सिखा रहे हैं कि हाउ टू पुट योर स्किल टुगेदर एंड जी. देन इट इज अप टू यू. बट देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू रिक्वायर टू गो आउट देयर एंड बी योर बेस्ट. जी. सो आपका एटीट्यूड से लेके काफी कुछ मैं वो सब सिखाता हूँ. एंड आई फील कि आज के तारीख में व्हाई नॉट कैपिटलाइज यार. यू नो व्हाट आई मीन. जी. जी. कल जी. अगर आपका प्रोड्यूस निकला कोई अच्छा डीजे, दैट इज गुड फॉर यू. Yeah. You know what I mean? It's good for you. So I feel there's no harm. ये सब आप अगर लोगों को कुछ सिखा सकते हो तो it's very good. And I'm very happy that a lot of my friends, एक music school का promotion, of course. A lot of my friends, because I have been a friend that is there to everyone and they have been friends with me, they come to my school, they give guest faculty, they come as guest lecturers. और इतने बड़े बड़े नाम जो मतलब आप कभी आप पैसा भी दो तो नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है. जी. 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 You know, whenever they come to Bangalore city, they stay back a day and they come to my academy. They host a workshop with my students, and even outsiders are allowed to come for it. And that is the best part. मैं आपको 1+1 2 सिखा सकता हूँ, but when they come and they give their experience and show their tricks and treats, that you can't day to day experience. Yeah. Day to day, that you can't even get even if you have paid a loan. You know what I mean? Yeah. Clement, when are you returning my 300 rupees? Akhtar bhai. Gary bhai, haha, बैंड वाले हैं हम. लॉल एक टिप मिलता है डीजे को लॉल. अच्छा, Gary bhai is also from here. Sunburn team is here. What about every second person becoming a DJ because they think it is easy money? Isn't it spoiling the industry? Jaslyn asked the question. No, I don't think you are allowed, or you should be thinking what every second person should do and what they shouldn't do. And every second person is thinking it's easy money. Of course, it is easy money. Firstly, it is easy money. Okay. Now you should be good at earning that easy money. Yeah. Nobody is spoiling the industry. It is that some are doing good, some are doing bad. Now, if the person who thinks like that is always going to be insecure about a lot of these things. You know what I mean? I don't think you should be bothered. अगर आप उतने अच्छे हो, तो how is it making a difference कौन आया है आपके competition में? जी, true. You should concentrate on becoming good yourself and not investing time in easy good, easy worth it. They come to spoil the industry. I don't think so. वो अगर वो कर भी रहे हो तो उससे हट जाओ क्योंकि उसमें आपका ही टाइम वेस्ट है. True. इंडस्ट्री इज ओनली ग्रोइंग. F&B इज ओनली ग्रोइंग. एक जमाने में हम लोग प्लान किया करते थे यार अगले महीने ये रेस्टोरेंट जाएंगे खाने के लिए. आज के तारीख में हफ्ते में 4 बार हम बाहर खाते हैं. जी. So many outlets are opening. So the more DJs, the more the opportunity. You know, I think you should only be concentrating on yourself and making yourself better, and not giving yourself an excuse for why you're not good. Yeah. And then put the blame on others that ये सस्ता है और या easy है या आ जाइए. Worst thing to do. जो अपना कर सकता है वो कैसे भी करे. वो पैसा खिला के करे. उसके गांड में दम है यार करने का, करने दो उसको. तुम्हारे पास नहीं है तो ठीक है यार. You know what I mean? Even we have not come up that way. We have today, wherever we have reached, we have never been able to afford to pay for our opportunity. You know what I mean? But there are some people who can pay for the opportunity. So if they can, it's up to them, yaar. How can we decide for them? You know what I mean? Ji. How to join your academy, sir? Somebody's asked this question, very recent one. I am Tanix. A DJ have asked a question. How to join your academy? Well, Tanix, right now we are offline, obviously because of the lockdown and stuff like that. I'm based in Bangalore, and everything, all the information is available up there online. And if you put the music school, COOL, not school, SCHOOL, it's the music cool, you know, music school. You will get information of where we are based. We are based in Indiranagar. Welcome whenever things are fine and we start business once again. Or you can get in touch with social media and I'll give you all the information.
म्यूजिक स्कूल बहुत पैसा कमा रहा है। अच्छा ओके, क्लेमेंट फॉर प्रेसिडेंट। क्लेमेंट आपके टूथपेस्ट में नमक है। अख्तर भाई अगेन। वी हैव लैक्स ऑफ वन ऑफ इंजीनियर्स। माई वन वन ऑफ माई मोस्ट वन ऑफ माई मोस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड, यूजुअली ये कभी लाइन पे आके किसी का ये चाय पे चुगली, ये चर्चा वर्चा पे घुसती नहीं है, आज आई है प्रियंजना, बहुत खास है एक्चुअली। क्लेमेंट फॉर प्रेसिडेंट ये भी मेरी खींच रही है और कुछ नहीं, बट आई वुड लव टू फकिंग बी द प्रेसिडेंट। इट्स बेस्ट जॉब यार, मतलब खाली सोचो कि किसको क्या काम देना है। Yeah, somebody wrote a very good line. I guess his internet is gone. We have lakhs of engineers coming out too. Depends on how hungry are you for surviving. Are you opening a music school branch in Mumbai as well? Internet. Internet. Yeah, I can't hear you.